Hello everyone, hello students, welcome to Eduauraa live class. This is Arpan Ashar, your maths teacher, and in today's session, what are we going to discuss? So students, in today's session, we will be discussing about the next part of complex numbers. That is, it is about De Moivre's theorem, Argand Plane, polar form, Euler's theorem, and many more. But before that, students, let us discuss about Eduauraa. What is this Eduauraa? So we all know that Eduauraa is what it is, a digital learning app, or you can say it is a digital learning platform which offers quality education at an affordable price all over India. Now students, सिर्फ इतना ही नहीं, along with it, Eduauraa also provides many things, but for which standards? So it provides videos from standard 6 to 12th, IIT, JEE, NEET, other competitive exams, and spoken English. Not only this much students, once you download this app, you will get a 14 days free trial और उसमें आप देख सकते हो कि along with videos, Eduauraa also provides ebooks. It provides mind maps, it provides subjective questions, past year papers, that is MCQs, and question answers, that is theory. Along with that, 2D, 3D interactive videos and performance monitoring reports. बट स्टूडेंट्स, ये सब के लिए आपको एक चीज करनी है, एंड व्हाट इज दैट? यू हैव टू डाउनलोड एडियोरा ऐप, एंड 14 days free trial है. Reminding you students, in this 14 days free trial, make the maximum use out of it. Now students, this was about Eduauraa. Now let's start with our session. तो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि in today's session we will be discussing about complex numbers, the next part. But before starting the next part, let's have a quick revision about the basics of complex numbers. What is the definition of a complex number? It is a combination of real and imaginary term. Imaginary term matlab I, the value of I is root of -1. And how do we denote a complex number? So we denote a complex number with Z, and उसका general form क्या है? लिखो comment section में. So the general form is Z is equal to x plus iy, or Z is equal to a plus ib. Then if the value of I is equal to root of -1, I square का value क्या था? -1. I cube का value -i raised to 4 का value 1. ये चार वैल्यू अगर याद रखते हैं तो I raised to कोई भी पावर हो, we can easily find. I hope you remember it. I have shown it in my previous session. Now students, along with it, मैंने एक शॉर्टकट दिया था कि अगर I raised to any power है तो हमें एक आंसर मिल जाता है. वो शॉर्टकट क्या था? That if the power of I is an even number, then answer is either 1 or -1. And if I raised to the power is an odd number, then we get either I or -i. So this was the shortcut students. और वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? चार वैल्यू I के याद रखने थे. कौन से? I square, I cube and I raised to 4. ये हुआ इमेजिनरी टर्म वाला पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज. नाउ सपोज इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z is equal to x, then that complex number is called as purely real complex number. And if z is equal to iy, then that complex number is called as purely imaginary complex number. Just remember this, ये हमें बहुत काम आने वाला है हमारे MCQs सॉल्व करने के टाइम पे. Along with that students, what is equality of complex numbers? So equality of complex numbers matlab when both x and both y terms are same, then you can say two complex numbers are equal. After that, we learned about conjugate of a complex number. So conjugate of a complex number, we denote it with z bar. And how do we find conjugate? Change sign of imaginary term, and that is how we find conjugate of a complex number. Along with that, students, after finding conjugate, we learned about modulus of a complex number. So what is modulus? Modulus is basically root of x square plus y square. And how do we denote modulus of a complex number?
So we denote modulus of a complex number with mod z. After modulus of a complex number, we learned about amplitude and argument of a complex number. बट मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था कि हम जो ये एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला है जो है tan inverse y by x and we denote it with theta. But if the complex number is little different, that means if it lies in some different quadrant, there is different formula for finding amplitude or argument according to quadrants that we will be doing today. Along with that, students, we did algebra of complex numbers that includes addition, subtraction, multiplication, and division. So this was about our previous session, students. Now let's start with MCQs of this session, and along with this session we will be discussing about De Moivre's theorem, Euler's theorem, Argand's plane, and many more. Now students, the first MCQ here is if x plus iy into 2 minus 3i is equal to 4 plus I, then check your options. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. So ऑप्शन ए में है x is equal to minus 5 by 13, y is equal to 14 by 13. ऑप्शन बी में है x is equal to 5 by 13, y is equal to minus 14 by 13. Option C is x is equal to 14 by 13 and y is equal to 5 by 13. And option D has x is equal to 5 by 13 and y is equal to 14 by 13. तो स्टूडेंट्स ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? So first of all, what we will do is we will solve the left hand side part. So when we solve this left hand side part, ये x plus iy को हम लिख सकते हैं x into 2 minus 3i plus iy into 2 minus 3i. हमने यहाँ पे algebra of complex number यूज किया which is equal to 4 plus i. Then multiply, तो यहाँ पे मिलेगा 2x minus 3xi plus 2yi minus 3yi square is equal to 4 plus I. What is I square? I square is nothing but minus 1. So 2x, can we take this I common? तो plus I और यहाँ पे अंदर आ जाएगा minus 3x plus 2y. And I square it is minus 1. So हमें क्या मिलेगा? Plus 3y is equal to 4 plus I. Now let's take real terms together. Let's take imaginary terms together. So हमें यहाँ पे मिलेगा 2x plus 3y plus minus 3x plus 2y I is equal to 4 plus I. इतना मिला. Now students, left side पे complex number, right side पे complex number, तो क्या करेंगे? और बीच में equal to sign. That means using equality of complex numbers, what do we get? So using equality of complex numbers, हमें मिलता है 2x plus 3y is equal to 4 and minus 3x plus 2y is equal to 1. Solve this simultaneously and get your answers. So students, write in your comment section simultaneous equation से अगर solve करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो what should be the first step? Now students, in this the first step will be what? So in this the first step will be multiply with that number जो term को cancel कर सके. So let's say I will multiply this equation with 3 and this equation with 2. तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे मिलता है 6x plus 9y is equal to 12 और सेकेंड इक्वेशन में हमें मिलेगा minus 6x plus 4y is equal to 2. अगर हम ये दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, गया 9 plus 4 क्या आएगा? 13 और यहाँ पे 14. तो y का वैल्यू क्या मिला? 14 by 13. अच्छा, हमारे ऑप्शन में 14 by 13 दिख रहा है, पहले चेक करो. यस, हमारे ऑप्शन में 14 by 13 y का वैल्यू दिख रहा है, लेकिन तीन अलग अलग जगह में है. उसमें से ऑप्शन बी निकल गया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. सो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन कम हो गए, बी और सी. अभी बचा क्या? ए और डी. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y ऑफ 14 by 13 in any of your equation of your choice and find the value of x.
तो जब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलता है 5/13। तो अगर x का वैल्यू 5/13 मिला, y का वैल्यू 14/13 मिला, that means the correct option here is none other than option D, and this is how we solve our sum. So students, I hope you understood how to solve. Let's move on to the next MCQ, and our next MCQ is what? So our next MCQ is, if mod of z minus 4/2 equals to 2, then the maximum value of mod z is equal to what? और हमारे ऑप्शंस क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए √5+1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2+√2 एंड ऑप्शन डी √3+1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, let's say alpha and beta. So from this we can clearly say that mod of alpha is less than equal to mod of alpha minus beta. तो यहाँ पे can we write mod of z minus 4 by mod of z will be less than equal to mod of z minus 4 by z. Now from this it is clear that mod of z minus 4 by mod of z is less than equal to 2. क्यों? गिवन में दिया है that mod of z minus 4 by z is equal to 2. तो ये less than equal to 2 आ गया, that means mod of z is equal to r which is greater than 0. तो यहाँ पे we can say that r minus 4 by r mod less than equal to 2. So from this what can you say? तो यहाँ से हम इतना तो श्योर है कि यहाँ पे it will be -2 less than equal to r minus 4 by r less than equal to 2. Now if you see properly the left inequality हमें क्या देगा? So यहाँ पे जब हम LCM लेते हैं तो हमारा लेफ्ट इनइक्वालिटी हमें देता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा r² + 2r - 4 which is greater than equal to 0. Now r² + 2r - 4 greater than 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मूला की हेल्प से। व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? द फॉर्मूला इज -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो वो फॉर्मूला की हेल्प से वैल्यूज फाइंड करो, तो वो वैल्यूज क्या मिलेगी? तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हमें दो वैल्यू मिलती है, और वो दो वैल्यू क्या होगी? दैट टू वैल्यूज विल बी -2 ± √20 upon 2. Yes students, यहाँ पे when you compare with your standard quadratic equation, a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to -4 है। so वहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं हमें r की दो वैल्यू मिलेगी, -1 ± √5. So from this we can clearly say that r is greater than equal to √5, and we can also say that r is less than -1 - √5. So from this it implies that r is greater than equal to √5 - 1. Now if you consider the right inequality, तो right inequality में यहाँ पे r² - 2r - 4 is less than 0 and r - 4 by r is less than equal to 2. So यहाँ पे जब हम right inequality consider करेंगे तो हमें उसके लिए रूट जो मिलेंगे वो होंगे फॉर राइट इनइक्वालिटीज, हमारे लिए वो रूट क्या हो जाएंगे? वो रूट हमारे लिए हो जाएंगे 2 ± √20 अपॉन 2 which is 1 ± √5. तो यहाँ से what can we conclude? तो यहाँ से we can clearly conclude that r का वैल्यू तो greater than 0 है। तो अगर r का वैल्यू greater than 0 है तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है, और वो पॉजिटिव वैल्यू क्या है? अगर हम ऑप्शन देखेंगे
तो हमें वो एक ही ऑप्शन को मैच करना है और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए. So from this it is clear that the correct answer is root 5 minus 1 and the corresponding correct option is option A. So students, moving on to the next question, and our next MCQ is what? So here the next MCQ is root of 5 plus 12i plus root of 5 minus 12i whole upon root of 5 plus 12i minus root of 5 minus 12i is equal to what? Now students, this is your homework question. You have to solve this because ये बहुत 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 easy है. थोड़ा lengthy है लेकिन easy है. तो what are the given options? So the given options here are minus 3 by 2i, option B 3 by 2i, option C minus 3 by 2 and option D 3 by 2. Chalo students, give me a hint. What will you do? What should be the first step? Now the hint here, write in your comment section, the hint here will be what? So the hint for this particular MCQ is, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखते हो यहाँ पे चारों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, दो प्योरली इमेजिनरी है, दो प्योरली रियल है. मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि मुझे इमेजिनरी टर्म डिनोमिनेटर से निकालना है. सो टू रिमूव दिस इमेजिनरी टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर, व्हाट इज द ओनली फर्स्ट स्टेप अवेलेबल विथ यू? तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, रूट दिखा तो रैशनलाइज. तो रैशनलाइज और डिनोमिनेटर, सॉल्व द न्यूमरेटर and then simplify your sum. So the moment you do that, you will automatically get your answer. Just for your help, I am giving you the answer, but you will have to solve and get the steps to reach to that answer. So your answer here will become minus 3 by 2i. But students, you have to solve and get this answer. मैंने आंसर दे दिया, that doesn't mean the sum ends here. If you don't practice, you won't be able to understand, and if you don't understand, you won't be able to score. So everything is interconnected, interlinked. It's all about your formula. Formula में भी ऐसा होता है, अगर formula आया तो sum आया, और अगर formula नहीं आया तो sum नहीं आया. बस same concept यहाँ पे लगने वाला है. अगर आपको steps आते हैं, अगर आपका basic clear है तो आपको maths आता है, नहीं तो maths में score nahi hoga. So students, this was about this MCQ. Now let's move on to the next MCQ, and our next MCQ is the argument of a complex number. Now students, before starting this MCQ, let me give you the idea about argument of different quadrants. So students, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? मैंने यहाँ पे दिया था tan इनवर्स y by x, करेक्ट. बट ये जो था वो मैंने बोला था ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. सो लेट्स से दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ इफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, दैट मीन्स x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विल बिकम थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan inverse of y by x. So this is the value of amplitude or argument for second quadrant. What if your complex number lies in your third quadrant? तो third quadrant मतलब यहाँ पे that means x negative, y negative. So here it will become pi plus tan inverse y by x, and this is the value of amplitude for your third quadrant. So this is the formula. And what if it lies in your fourth quadrant? Fourth quadrant में क्या होता है? X positive, y negative, and the formula for theta in fourth quadrant will be theta is equal to 2 pi minus tan inverse y by x. This is the value of amplitude for your fourth quadrant. So students, this was about the formula of amplitude in 4 different quadrants, and this is you have to remember. So students,
What are your different formula of amplitude? The different formula of amplitude are tan inverse y by x, pi minus tan inverse y by x, pi plus tan inverse y by x, and 2 pi minus tan inverse y by x. This different formula will vary according to your quadrants, and these are the formula according to your first, second, third, and fourth quadrant respectively. So students, I hope you understood what is the formula of amplitude. Now यहाँ पे मैंने हिंट तो दे दिया, मैंने फॉर्मूला भी दे दिया, अभी आगे का पार्ट आपको करना है. हाउ विल यू सॉल्व? तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस आई रूट 3 होल स्क्वायर होल अपॉन 4i इंटू 1 माइनस आई रूट 3. हाउ विल यू सॉल्व? तो सबसे पहले तो हमें अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है तो सब द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्सपांड योर न्यूमरेटर विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मल्टीप्लाई योर टर्म्स इन डिनोमिनेटर. उतना करने के बाद you will have to remove imaginary term from denominator. So if you want to remove imaginary term from denominator, what is the next step? You have to take conjugate of denominator. Yes students, the moment you take conjugate of denominator, you will get one term in complex form. और वहां से हमें clearly पता चल जाएगा कि ये जो simplified complex number बना वो कौन से quadrant में बना. और अगर वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पता चल गया, वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर फॉर्मूला. वो फॉर्मूला में डालो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, आर्ग्यूमेंट का आंसर लेके आओ. सो स्टूडेंट्स, हाउ विल यू सॉल्व दिस? Expand your numerator, multiply your denominator, find conjugate, get it in a simplified form, check which quadrant does it lie. I hope you remember your quadrant, students. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. First quadrant दोनों positive plus plus, second quadrant minus plus, third quadrant minus minus, fourth quadrant plus minus. And this is how you find the answer of this argument. Just for your help, I will give you the answer of this particular MCQ. But again students, I am repeating, सिर्फ answer मिल गया उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है until and unless you practice. So the correct answer here is pi by 2. So when you solve this, you should get this answer. If you don't get this answer, that means कहाँ ना कहाँ वो cheeky है. I hope you understood. Now moving on to the next question students. The next MCQ here is what? So the next MCQ is, if z is a complex number such that mod of z is equal to 4 and argument of z is equal to 5 pi by 6, then it is equal to what? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइनस 2 रूट 3 प्लस 2i, ऑप्शन बी 2 रूट 3 प्लस i, ऑप्शन सी 2 रूट 3 माइनस 2i एंड ऑप्शन डी माइनस रूट 3 प्लस i. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा? नाउ हियर comes your polar form into consideration. So students, सबसे पहले तो how to convert in polar form. Now what is the standard form of a complex number? It is z is equal to x plus iy. This is your Cartesian form. क्या कहते हैं इसे? Cartesian form. अगर मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मुझे एक रेडियस फाइंड करना है. So the radius is root of x square plus y square and I have to find theta. Now again students, the value of theta varies according to the given question, and varies according to the given question means कि वो कौन से quadrant में lie कर रहा है. But अभी यहाँ पे what we will do is we will write a standard value कि theta का value tan inverse y by x है. करेक्ट? नाउ हमें थीटा मिल गया, हमें आर मिल गया. अगर हमने ट्रिगो ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें एक चीज ट्रिगो में सिखाया था कि x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Most important thing to remember students, ये दो वैल्यू अगर आपको याद है then you can easily convert in your polar form. So the moment you get x and y value, you can directly substitute in your Cartesian form. So you get z is equal to r cos theta plus
I into r sine theta. Let's take this r common. So we get cos theta plus I sin theta. और ये जो हमें मिला है z is equal to r into cos theta plus I sin theta. This is nothing but your polar form. Or how to find this value of r? The value of r which you have to find is nothing but root of x square plus y square. And how to find the value of theta? It is tan inverse y by x. But mind you students, मैंने पहले ही बोला था कि this value of theta will vary according to the quadrant. So if you want to convert into polar form, find value of r and theta, substitute मतलब value डाल देना है, and this is how you write in your polar form. और अगर पोलर फॉर्म से हमें कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें थीटा दिया हुआ है, हमें मॉड जेड मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, वो हमें कौन से वैल्यू में डालना है? वो हमें पोलर फॉर्म के वैल्यू में डाल के सब्स्टिट्यूट करना है. Putting a value and substituting a value are totally different things. Keep this thing in mind. There is a difference in putting a value and substituting a value. When you are converting from Cartesian to polar form, you are just putting the value. But when you are converting from polar to Cartesian form, you are putting a value, but after that you are substituting a value. So you will get in your Cartesian form. Remember this difference, students. So यहां हमारे पास मॉड z का वैल्यू है 4, हमारे पास आर्ग्यूमेंट का वैल्यू दैट इज थीटा का वैल्यू है 5 पाई बाई 6. तो क्या करेंगे? z क्या है? इट इज r इंटू कॉस थीटा प्लस I sin theta. You just have to substitute the value. So 4 is equal to cos 5 pi by 6 plus I into sin 5 pi by 6. Now students, ये हुआ putting a value. But हमें कौन से फॉर्म में फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में. तो कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करने के लिए पुटिंग के बाद सब्स्टिट्यूटिंग आना चाहिए. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, you end up getting the answer as what? You end up getting the answer as, check your option students. अच्छा, अभी ये 5 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो अगर 5 पाई बाई 6 देखने जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव हुआ. ऑटोमेटिकली चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन निकल गए. कौन से दो ऑप्शन बचे? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. अभी ये दो ऑप्शन में से भी हमें सिलेक्ट करना है. तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 5 पाई बाई 6, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के आजू बाजू होगा. तो 30 और 60 अगर देखने जाओ, 30 और 60 में √3/2 आता है और 1/2 आता है. मतलब मेरा डिनोमिनेटर तो 2 से फिक्स हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा. तो वो एक ही ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से. कौन सा ऑप्शन है? आंसर मिल गया ना डायरेक्टली, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू. -2√3 + 2i आंसर आ गया. समझा? एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व. नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट दिस एमसीक्यू. ये हुआ पोलर फॉर्म. नाउ लेट मी शो यू आर्गन्स डायग्राम. तो आर्गन्स डायग्राम अगर हमें ग्राफिकल सम आया कि मुझे ग्राफ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है तो कैसे करेंगे? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हमें दिया है x = 2 + 3i. अगर मुझे इसे ग्राफिकली दिखाना है तो क्या करेंगे? नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर दिया. 2 + 3i, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेट्स से ये हमारा पॉइंट 2 है, लेट्स से ये हमारा पॉइंट 3 है. तो 2 + 3i को अगर प्लॉट करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. And this point is nothing but your 2 + 3i. And this is how you draw on a graph. And this is called as Argand's diagram.
क्या कहते हैं इसे? It is called as Argand's diagram. So students, this was about the Argand's diagram. Argand's diagram में सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्राफिकली हमको सम सॉल्व करना है. Let's take one more example students. अगर हमें x का वैल्यू दिया है -2 प्लस 4 है, तो लेट्स से ये -2 है, लेट्स से ये 4 है, तो आर्गन्स डायग्राम में कैसे सॉल्व होगा? लेट्स से ये यहाँ पे आ गया एंड दिस इज नथिंग बट -2 प्लस 4 and this is how you plot in your Argand's diagram. So students, I hope you understood how to solve this. Now let's move on to the next question, and our next question is what? So students, our next question is amplitude of -1 minus I root 3 is what? Our options are option A minus pi by 3, option B pi by 3, option C 2 pi by 3 and option D minus 2 pi by 3. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे हिंट दो क्या करने वाले हैं. एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोला है. हाउ टू सॉल्व दिस? यहाँ पे -1 माइनस आई रूट 3 है, दैट मीन्स x नेगेटिव y नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x. यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x -1 है, y माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन -1, which is nothing but pi plus tan inverse root 3 upon 1. Now students, what should be the next step? Come on, apply your tiny little brains. So the next step here will be what? So the next step here will be nothing but take LCM, and when you take LCM, what do you get? Tan inverse root 3 का वैल्यू है, yes वो वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो and get your answer. So the next part you have to solve on your own. So now students, moving on to the next question. The next question is what? Now the next question will be -3 minus 4i is equal to what? और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं. Again students, this is your homework sum, but before that what you have to do is you have to remember one formula, and that one formula is what? So students, that one formula which is given to us, or which I will be giving to you, is nothing but, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म. फिर z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म. अभी एक और फॉर्म है which is z is equal to r into e raised to I theta. ये जो फॉर्म है that is called as Euler's form, or you can say exponent form. And from this we can clearly say that e raised to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. So this is nothing but your Euler's form. Remember this 3 different forms students, and with help of that हमें ये आंसर फाइंड करना है. So how do you find the answer? तो सबसे पहले तो हमें रेडियस फाइंड करना है. रेडियस फाइंड करने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला दे दिया था, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Compare your question, compare this question with your standard Cartesian form. रेडियस फाइंड करो, थीटा फाइंड करो, सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज योर यूलर्स फॉर्म. नाउ रिमेंबर वन मोर फॉर्म और वन मोर थ्योरम व्हिच इज डी मॉयर्स थ्योरम. एंड डी मॉयर्स थ्योरम क्या कहता है? इट इज बेसिकली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n अगर दिया है, then it is equal to cos of
n theta plus I sine of n theta. So this is nothing but your De Moivre's theorem. So based on this, you will have to solve this MCQ. So students, this was about today's session. I hope you enjoyed today's session. I hope you liked today's session. I hope it was easy and interesting. So students, in our next session, we will be discussing few more MCQs on this, and along with that, we will be doing the next part of complex number, which is complex cube root of unity, and many more. So students, let's end this session here. But before that, students, a gentle reminder. डाउनलोड एडियोरा ऐप 14 डेज फ्री ट्रायल है, वीडियोस है, सब कुछ है, ई बुक्स है. डाउनलोड कीजिए ऐप, 14 डेज फ्री ट्रायल है, मैक्सिमम वैल्यू वीडियोस चेक करिए, देखिए. Make your basics strong, make your concepts strong, make your subject strong. This is Arpan Ashar signing off for the day. Enjoy.